इलेक्रामा 2025 की मेगा फ्लैगशिप इवेंट और साथ ही ऐप लॉन्च के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन हुआ था। इलेक्रामा 2025 विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो और साथ ही मेगा फ्लैगशिप इवेंट है जो वडोदरा में आयोजित होने जा रहा है। उससे पहले इलेक्रामा की ओर से वडोदरा में मेगा रोड शो का आयोजन करवाया गया है। तब फरवरी 2025 में ये मेगा फ्लैगशिप इवेंट आयोजित होने जा रही है। इसके अलावा इस दौरान इलेक्रामा एप्लीकेशन की घोषणा भी की गई है जो कुछ ही वक्त में iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। 22 से 26 फरवरी के दौरान ये मेगा फ्लैगशिप इवेंट आयोजित होने जा रही है, जिसे लेकर आज पत्रकार परिषद के दौरान ज़्यादा जानकारी दी गई थी। इलेक्रामा जो है वो जो भी कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर एवरीबडी हु इज़ कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड. Today it is reached a stage that we will have more than 1,100 exhibitors and we expect a footfall of about 400,000 persons with a business inquiry to be generated to the tune of $20 billion. So that is the reason why I said that the way this has come up, it is one of the most important event in the world for this sector. तो इसलिए जिसको भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से कुछ रिलेशन है उनको ये इवेंट में ज़रूर आना चाहिए. ગુજરાત ઇન્ડિયામાં સૌથી મોટામાં મોટું ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરરનું હબ છે. અહીંયાથી જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઇલેક્ટ્રામામાં પાર્ટિસિપેટ કરશે એટલા વધારે આપણને કસ્ટમર્સ મળશે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં, જ્યાં આપણે આપણા પ્રોડક્ટ્સ ડિસ્પ્લે કરી શકશું, આપણો ધંધો વધારી શકશું. લગભગ 1100 એક્ઝિબિટર્સ છે. જર્મનીથી છે, ઓસ્ટ્રિયાથી છે, ઓસ્ટ્રેલિયાથી છે, સ્પેનથી છે અને લગભગ 4 લાખ લોકો આ એક્ઝિબિશન જોવા આવવાના છે. આ એક્ઝિબિશન ઘણું મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે કેમ કે ગુજરાતમાં જે રીતે પહેલાં કીધું કે ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરર યુનિટ્સ છે. એ લોકો જો આ એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે તો તે લોકો પોતાના પ્રોડક્ટ બહારના લોકોને દેખાડી શકશે, પોતાનું मार्केटिंग કરી શકશે અને ધંધો આગળ વધારી શકશે. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।